This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed. Information from the art museum show a half-read article, some PBS documentary was all bubbling up in my frontal lobes, mixing itself together into a sparkling cocktail of history and information. I hate that depressing realization you get when you finish a TV series and then you have to find new purpose in life. Like you're just sitting there like, what am I supposed to do now? If the Earth is currently governed by a manner of animal king, sentient cloud, or other governing body that either refuses to or is incapable of listening to us. Your filter bubble is kind of your own personal, unique universe of information that you live in online. And what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do. But the thing is that you don't decide what gets in. And more importantly, you don't actually see what gets edited out. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations, there are no peoples, there are no Russians, there are no Arabs, there are no third worlds, there is no West. There is only one holistic system of systems. One vast and humane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. The commercial sponsor of the media is naturally more sensitive to the audience than anybody. The commercial sponsor is going to demand a kind of rapport between his investment and the show, which will ensure a great deal of popularity and representativeness to the show. इलाके में हुए एक मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का शीर्ष आतंकी बुरहान वानी भी मारा गया। बुरहान के सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम था। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बुरहान मुजफ्फर वानी मार गिराया गया। Mujahideen Commander Burhan Wani. Enemy. Black and white. There can be no prevarication. It's an anti-national. No grey area. A terrorist has been killed on Indian soil. Fantastic success. There's no dilemma we can ever have. बुरहान की मौत का विरोध कर रहे लोगों पर जरूरत से ज्यादा और गैर कानूनी बल प्रयोग किया गया। ऐसी आक्रामक कार्रवाइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज नहीं दबाई जा सकती। Be equally condemning of those who give shelter to terrorists and use them as political instruments. भड़काने वाला पाकिस्तान सरहद पार से लगातार साजिश पर साजिश कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि यूएन की जांच टीम बुरहान के एनकाउंटर की जांच करे। Laws of physics no longer apply in the future. ये जो तेल है ये जहाजों में भरकर इस एरिया से आता है। मैं इस एरिया को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है वो एरिया। दूसरी बात, अगर चाइना का यहाँ पे कंट्रोल बढ़ेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। भारत को फिर पाकिस्तान और चाइना दोनों से एक साथ निपटना पड़ेगा। Stupid. Bunch of dumbasses going around in circles. Yeah, stupid. It's like just a bunch of dumbasses going around in circles. So, the propaganda tools that we're going to talk about that keep us in this fog. Reframing, repeated affirmations, vicarious and imitative learning, distraction and denial, classical and operant conditioning. Maintaining tanks at this altitude is not easy. You need special kind of lubricants. These are the machines that add muscle to the firepower
of the Indian military. Forces. And so Kashmir is an advanced stage. It's a disease can have many stages. Many other parts of the country have similar diseases, but not as advanced. बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकवादी था और दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था. So these boys, Burhan Wani and these new educated youth, they were part of non-violent movement in 2008, 2010 agitation. What happened to them? Kashmir police and security forces disrespected them, beaten them, tortured them. They did not allow them to pursue the path of non-violent democratic movement. उसके खिलाफ 15 मुकदमे हत्या के प्रयास के, स्थानीय लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने के और सुरक्षा बलों से हथियार और गोला बारूद छीनने के, अवैध हथियार और गोला बारूद रखने के और इस प्रकार के कई गंभीर आरोप हैं. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'm now to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे. You came here happy and thankful. और think sir, आपके ideas हैं, बोलते करते. 3-4 questions I would like to enjoy. But Modi sir, Modi sir, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध. एक स्थिति है कि पत्रकार सैनिकों के साथ बनकर से रिपोर्टिंग करे, जवानों की बंदूक जिस तरफ है आपको वही दिखे, जाहिर है पक्ष सुरक्षा बलों का ज्यादा होगा. दूसरी स्थिति है कि पत्रकार उस तरफ से कवरेज करे जहां सुरक्षा बलों की गोली पहुंच रही हो, लोग सुरक्षा बलों पर पत्थर मार रहे हो या मर रहे हो, ऐसे में आपको सिर्फ लोग दिखेंगे, सुरक्षा बल नहीं. तीसरी स्थिति है कि पत्रकार कहीं बीच में हो और दोनों तरफ घट रही घटनाओं की अधिक से अधिक जानकारी दें. आप बताएं कि इनमें से कौन सी स्थिति बेहतर है. हालांकि एक स्थिति तो यह भी होती है कि पत्रकार इन तीनों स्थिति में नहीं होता, फिर भी रिपोर्ट करता है. फिर भी आपसे सवाल है कि दूसरी और तीसरी स्थिति अगर बंद कर दें तो क्या आप पूरी तस्वीर जान पाएंगे. आपको यह भी पूछना होगा कि आप जानना क्या चाहते हैं. निकालते गाड़ी वाला है. Breaking loose. All hell is breaking loose in Turkey right now. Explosions and gunfire rocking the capital of Turkey, where reports of a military coup started breaking just a few hours ago. They declared martial law. There was gunfire. Police were shooting at helicopters. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. What an amazing atmosphere at the Maracana today. The greatest joy I've had as an athlete is to march into the stadium and complete number 7 for India. Thank you so much for the years of support. We created the record together. 120 करोड़ लोग हैं और एक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में नहीं ले आए. नॉर्थ कोरिया देखो कौन सी क्या कंट्री है, वहाँ कंप्यूटर चलाने नहीं देते लोगों को, फ़ोन करने नहीं देते. 2 गोल्ड मेडल. जब अफजल गुरु को फांसी लगी तो उमर साहब को मालूम था, इसलिए उन्होंने सारे इंतजाम पहले ही किए थे. हमें तो कुछ भी नहीं मालूम था, हमें तो अचानक पता चली. और उसके बावजूद भी हमने कोशिश की कि कर्फ्यू लगाया जाए ताकि बच्चे बाहर ना आए. मगर जहाँ कर्फ्यू लगाया दूसरे इलाकों में बच्चे चले गए, उनको कैंप्स के अंदर लेके गए लोग, उनको पुलिस स्टेशन पे लेके. शुक्रिया. Now what you see in these visuals is a brave Jawan, Shuman. He's climbed 50 meters right to the top of this telephone tower and he's taken down a Pakistani flag. He is wearing his patka. He goes up all this way. He brings down the Pakistani flag.
he puts up the tricolor and he salutes the tricolor. डिबेट का मतलब ये नहीं होता कि जो सामने बैठा है बस उसको हराना है। अरे डिबेट का मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज करेंगे, जो चीज गलत है उसके ऊपर विचार करेंगे, उसको बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ महान एडिटर्स हैं जो बस अपने सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं कि ये हारना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे साला खबर गलत हो और अन्य अंड बंड कुछ पता आता नहीं है, लेकिन लगे हुए हैं। बेकार, सब बेकार। वो अभी आपने देखी नहीं है, अभी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, वो आपके जैसे टेररिज्म के नहीं है। और आप मिसकोट कर रहे हैं। मनोहर पर्रिकर को ज्यादा रक्षा मंत्री की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जो भारत को दर्द देगा। You may be wondering why IR Baboon is doing this. Well, we're not sure either, but it seems to keep the screen clean. ऐसे मीडिया चैनल से जिनको मीडिया चैनल बोलने में शर्म आता है, जो दलाली के अड्डे हैं मोदी सरकार के, जी न्यूज और टाइम्स नाउ और न्यूज एक्स जैसे। आप लोगों ने देखा पिछले दिनों में एक बाइनरी क्रिएट करके हमारे सामने रखी गई, बुरहान वानी और शाह फैसल। कहा गया एक गुड कश्मीरी है, एक बैड कश्मीरी है, एक अच्छा है, एक खराब है। देखिए शाह फैसल ने भी मिलिटेंसी देखा, उन्होंने भी अपने घर पर बुरे हालात देखे, लेकिन वो तो आतंकवादी नहीं बने, वो तो IAS अफसर बने। लेकिन वही शाह फैसल का स्टेटमेंट आता है जिसको जी न्यूज और टाइम ना चलाता नहीं है। शाह फैसल कहते हैं कि आपने जो ये सब चला रखा है, अगर ये सब चलता रहा तो मैं रिजाइन करूंगा। अब अगर अन्ना गोस्वामी में हिम्मत है तो करे शाह फैसल का इंटरव्यू, अब अगर सुधीर चौधरी में हिम्मत है तो करे शाह फैसल का इंटरव्यू। You trying to make me have them? For me? I'm just here to help you. If you don't want my help, I'll seek other advice. I think you should know when to stop helping me. I'm never finished helping everybody. I can't be finished. To go after terrorists, Russia, Iran, and China are supporting the Syrian army, while the US-led coalition is supporting rebel forces in Syria. The problem is those rebel forces sometimes join forces with terrorists, and it becomes difficult to distinguish them from terrorists. What do you want?